In this video, we will discuss about replacement problem in operation research. So we start the replacement problem. Replacement means we change the item when its efficiency will deteriorate. So we define this replacement as, पहले तो डेफिनेशन बतानी होगी, डेफिनेशन क्या होती है, रिप्लेसमेंट बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं. तो वी डिफाइन एज द एफिशिएंसी of all industrial and military equipments deteriorate with time. Sometimes the equipment completely fail. Equipments completely fail. Then we replace these equipments with a new one. So that process, or this process basically, this process is called replacement. This process is called replacement. We are using industrial and military equipments deteriorate with time. Sometimes the equipment completely fail. When fail, so we replace the items. So that process is called the replacement. Now, here we will discuss about the different types of replacement problems. So we shall study, we write down as we shall study the following types of replacement problem. Replacement problem. So we mention the types. First is replacement of major equipments. Major equipments. The deterioration with time. With time. We can take the example that is we are using the machines, or we can use the transport as truck, car, buses, etc. Okay. Now, second type, we have a replacement of equipment. Replacement of equipments. Equipment, or we can say the items, in anticipation of complete failure.
नॉट कंप्लीट फेलियर, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम। और थर्ड वन, replacement of an equipment may be necessary due to researches, new researches मीन्स हम कह सकते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन आ गया किसी का, तो वी नीड टू रिप्लेस फाइटर प्लेन्स हो गए एक्सेट्रा, वी कैन टेक दैट, अदरवाइज द सिस्टम may becomes out of date, may becomes outdated or out of date. Okay, so there are several reasons to replace the items as per time, duration. अब जैसे हमारी कार है, okay, so we have 15 years in NCR and various cities. So after 15 years, we replace the cars. Okay. Now we start the first topic, that is the replacement of major equipments that deteriorate with time. That deteriorate with time. Now, on the basis of that, we have one theorem. थ्योरम की बेसिस पे हम इसे प्रूव करेंगे कि इक्विपमेंट हमारे डिटरेट हो रहे हैं टाइम। So to find the best replacement age, so we have to find the best replacement age। अब उसके लिए रिप्लेसमेंट टाइम भी हमें होना चाहिए कि कब उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। बेस्ट रिप्लेसमेंट एज, और वी कैन से दैट द टाइम ऑफ ए मशीन when we have a first condition is that its maintenance cost, its maintenance cost is given by a function increasing with time, increasing with time। Second, its scrap value, its scrap value is constant, scrap value is constant, मतलब स्क्रैप वैल्यू भी इसकी कांस्टेंट है। और थर्ड वन इज द मनी वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड। not considered। So we shall prove this
particular theorem by assuming some parameters. So we can take a let C. C, we assume that cost of the machine. C is the cost of machine. S we consider as the scrap value. Scrap, or we can say that the resale value. Resale value. And here we use the CMT. CMT, we can say that the maintenance cost. That means maintenance cost of the machine. So we write down the maintenance of the machine. Maintenance cost of the machine at time t. जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो तो पता ही है कि इंक्रीज कब होगी, अगर हमारा टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सी एम टी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इंक्रीज विद टाइम। तो सी एम टी इंक्रीज विद टाइम, वी राइट डाउन सी एम टी इंक्रीज विद टाइम टी। टाइम के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, जैसे कोई भी आप व्हीकल यूज कर रहे हैं या कोई भी मशीन है आपकी। So now we take some cases. So we start the case one. Case one. So when we use the parameter t, that means time t is continuous variable. Is continuous variable. So there are two things. One, we can take time t as a continuous variable, or we can take as the discrete variable. So first we solve for the continuous variable. अगर हमारा time t continuous है, so then total maintenance cost क्या होगी उसकी? So we write down the things, the total maintenance cost of the machine, maintenance cost of the machine. So when we take the CMT is the time, so maintenance cost of the machine so that can be in n years. So this can be denoted as 0 to n. So time t from 0 to n, or CMT into dt. CMT into dt. So the total cost, so we say that the total cost of the machine in n years is equal to cost of the machine, plus maintenance cost और माइनस स्क्रैप वैल्यू। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन। मशीन की कॉस्ट क्या है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी उस पर, और उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, रीसेल वैल्यू में। So this key we can write down as cost of the machine we denoted as C, plus maintenance cost we denoted as S. Uh, maintenance cost we write down as plus integral 0 to n
CMT into DT or minus when scrap value is S. So scrap value or initial value क्या है उसकी S. So we can write down this as C minus S plus integration 0 to N CMT into DT. अब यहाँ पे ये था टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसी पे हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट ऑफ द मशीन, उस मशीन की एवरेज कॉस्ट क्या होगी? तो एवरेज कॉस्ट भी टेक एज ए एन, तो वी डिनोटेड बाय ए एन। तो एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो वी राइट डाउन दिस एज सी माइनस एस प्लस इंटीग्रेशन 0 to n CMT into DT or divided by n. So this is the average cost. So for finding the minimum value of an, for the minimum value of an, so we take the derivative. Derivative of what? So derivative of an. So just a maximum minimum function. So we have a derivative of an upon dn. So n is equal to 0, and the second derivative of an upon d square into n, which will be positive. So we do the first derivative of that. So we write down a dA upon dn. तो dA upon dn, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि c माइनस एस अपॉन एन लिख दिया हमने इसको, और इसको हमने लिख दिया प्लस 1 अपॉन एन और इंटीग्रल 0 to n, और ये क्या हो गया हमारा CMT और DT हो गया। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव n वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू n करना है, तो 1 अपॉन n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे न्यूमरेटर? तो हमारा सी माइनस एस ही रहेगा, तो सी माइनस एस और 1 अपॉन एन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 to n और सी एम टी और डी टी, और प्लस सेकंड फंक्शन में क्या आ जाएगा? ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज सी एम टी, और टी रिप्लेस किसमें हो जाएगा? एन में, तो सी एम एन। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी एम एन, और दिस इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इक्वल टू 0 पुट किया है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है जैसे सी एम एन की। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एम एन हियर? तो सी एम एन इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सी माइनस एन अपॉन एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा, और इंटीग्रल 0 to n और सी एम टी और डी टी, सी एम टी डी टी। अब जो सी माइनस एस अपॉन एन है, ये क्या है? ये ए एन ही तो है। तो दिस इज इक्वल टू ए एन। तो सी एम एन की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई? दिस इक्वल टू ए एन। तो जब ए एन आ गई, तो जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एन स्क्वायर करेंगे, तो दिस शुड बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो दिस शुड बी पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो द एवरेज कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट होगी मशीन की, एवरेज कॉस्ट ऑफ द मशीन पर ईयर is minimized by replacing it when the average cost becomes equal to the current maintenance cost, current maintenance cost
So this is the first part. So when we take the continuous variable as time t. Now we move to the second case. So for case second, when time t is discrete variable. अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो अब यहाँ पे लिखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी इसकी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एन ईयर्स। और कंटिन्यूअस में तो हमने इंटीग्रेशन साइन यूज करते हैं और डिस्क्रीट में हम क्या यूज करेंगे, समेशन। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, और या सी एम टी यूज कर रहे हैं तो हियर वी यूज द एम। तो एम इज इक्वल टू 1 टू एन सी एम टी। So then cost of the machine in n years. So this will equal to C minus S plus summation of M is equal to 1 to N CMT. So here we also write the average cost. So then the average cost, So here the value of an, an will be C minus S upon n plus 1 upon n into summation of m is equal to 1 to n CMT. So this is our equation number 1. So now अब an को check करना है हमें, so we can say that but an is minimum. An is minimum for the value, that value of n, that value, we can write down directly, for the value of n for which del a n minus 1 less than 0 less than del a n। इसका क्या मतलब हुआ, इस जो वैल्यू है हमारी कांस्टेंट की, तो द वैल्यू ऑफ डेल ए एन विच इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। तो नाउ अब हमें इसमें क्या करना है कि जो एन है एन को रिप्लेस कर देंगे एन प्लस 1 से। तो फर्स्ट जो सॉल्व करेंगे, तो दिस विल इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन प्लस 1। दिस इज अवर ए एन, इक्वेशन 1 से ही हम यूज कर रहे हैं, और प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा एन प्लस 1, और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 1 टू एन प्लस 1 और सी एम टी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ए एन प्लस 1 के लिए, माइनस ए एन। तो ए एन के लिए एज इट इज सी माइनस एस अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एम इक्वल टू 1 टू एन और सी एम टी। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से c माइनस एस हमने कॉमन ले लिया। व्हेन वी टेक c माइनस एस एज कॉमन, तो फर्स्ट का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 1 अपॉन एन प्लस 1 और माइनस आ जाएगा 1 अपॉन एन। सो सेकंड के लिए तो दिस इज माइनस साइन, तो माइनस 1 अपॉन एन। नाउ अब इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं यहाँ से, तो वी कैन राइट डाउन दिस टर्म एज 1 अपॉन एन प्लस 1, और this will be the summation of m equal to 1 to n plus 1। तो m equal to 1 to n plus 1, तो फर्स्ट हम इसको कहाँ तक लिखते हैं, m equal to 1 to n तक लिख देते हैं। तो m equal to 1 to n लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n plus 1 होगा। तो m की जगह पे यहाँ पे क्या किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये n plus 1 से। तो हम उस टर्म को लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी एन प्लस 1 इंटू टी, और प्लस समीशन में जब लिखना होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू n
और ये रहेगा हमारा CMT। ठीक है, n+1 का टर्म हमने यहाँ लिख दिया, और ये टर्म फोर्थ वाला ये एज इट इज आएगा -1/n, और समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to n और CMT। Okay, so now we move to the next step. So this we write down C minus S, 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 1 upon n plus 1। अब यहाँ से 1 upon n plus 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to n CMT प्लस CN+1 into T -1/n summation of m equal to 1 to n CMT। तो नाउ अब यहाँ से क्या होगा, n इंटू n+1 एलसीएम आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा, C-S/n इंटू n+1। तो ये आ जाएगा n+1 मीन्स n-n+1। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 प्लस 1/n, 1/n और +1 मीन्स 1/n+1, और CN+1 into T, CN+1 into T मीन्स दिस टर्म, और प्लस, अब इस टर्म से और इस टर्म से हमने ये कॉमन ले लिया, क्या, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to n और CMT। तो यहाँ से जो कोफिशियंट आया 1/n+1, तो ये आया, और माइनस का आया 1/n। तो वी राइट डाउन दिस एज C-S अपॉन n इंटू n+1, और प्लस 1/n+1 CN+1 इंटू T, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/n, और n+1 एलसीएम आ जाएगा, तो सेम क्या हो जाएगा, n-n+1, तो यहाँ से भी माइनस साइन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, तो समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to n और CMT, तो ये भी किसका हो जाएगा फिर, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये भी मतलब माइनस का हो जाएगा। तो दिस वैल्यू, दैट मीन del an विच शुड बी पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx शुड बी पॉजिटिव। तो हियर इज ऑल्सो, तो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव वैल्यू। तो जब हम इसको देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इस दिस कैन बी रिटन एज, तो -C-S/n इंटू n+1 प्लस 1/n+1 CN+1 इंटू T माइनस 1/n into n+1 summation of m is equal to 1 to n CMT should be पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इट मीन्स दैट जो CN+1 है हमारा, CN+1 इंटू टी, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन C-S अपॉन n। अब n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा सभी में, तो C-S अपॉन n प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to n CMT। सो अब ये जो वैल्यू आई है आपकी सॉल्व होके, मीन्स दिस वैल्यू, ये क्या है, तो दिस वैल्यू इज द an वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि CN+1 इंटू टी विच इज ग्रेटर देन an, तो विच इज ग्रेटर देन an, और सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर CNT। यही तो n+1 हो गया, और CNT के लिए करेंगे तो वो क्या होगी हमारी, विच इज लेस देन होगी किससे, an-1 से। जब हम n+1 को n से रिप्लेस कर देंगे, तो n क्या हो जाएगा फिर, n-1 से, विच इज लेस देन। अब इससे हमें क्या फाइंड आउट हो गया आता है कि फर्स्ट ये कहता है कि डू नॉट रिप्लेस द आइटम, डू नॉट रिप्लेस द आइटम
if the next year maintenance cost is less than the previous year cost. Or basically we can say that average cost, summation लगा तो previous year average cost. और second, replace if the next year maintenance cost is greater than previous year. Greater than previous year. Average total cost. Okay. So the problem based on this replacement we will discuss in next video.